नेक्स्ट इज 13.1 में 12 है, दैट इज एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट इज 0.5 एंड 0.5. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls given that? And then after there are two cases are provided. First one is the youngest is a girl and second one is at least one is a girl. तो फर्स्ट थिंग इज इसमें आपको सैम्पल स्पेस किस तरह से दिखाना है. ओके, तो यू जस्ट सी दिस पार्ट. ओके, इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, अभी दो चिल्ड्रन है तो उसका सैम्पल स्पेस आपको लिखना है. सो आई राइट दैट कि यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस बनाया. ओके, देर इज प्रोबेबिलिटी दैट के बोथ आर गर्ल्स, सो आई शो इट बाई स्मॉल जी लेटर, सो स्मॉल जी. ओके, it may be possible that first one is girl and second one is the boy. Okay, और ये भी पॉसिबल है, बी जी भी पॉसिबल है, या फिर बी बी भी पॉसिबल है. राइट. ओके, सो दिस इज माई सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल्स आर 4. राइट. नाउ what is the conditional probability if both are girls? Okay, तो I will quote this event. both are girls वाली जो event है वो मैं पहले लिख रहा हूँ. Okay, so let us say it is E. Okay, both are girls. Okay, and I can also write down its sample space. both are girls, that means एक ही possibility है and that is equals to GG. out of all एक ही possibility है, and from that I can say that probability of E can be given as 1/4. right. Okay, फिर आता है youngest is a girl. Okay, so let us say F is youngest is a girl. Okay, so let us say ये जो sequence है उसमें जो second one appear हो रहा है that is the youngest. Okay, तो if I want to write down the sample space, तो दूसरे वाले में जब G आएगा so that will be considered as a youngest one. Okay, so G हो सकता है इस sample space में, और दूसरा combination है वो BG हो सकता है. Okay, so from that I can write down probability for F, and that can be given as 2 out of 4 and it is 1/2. Right. Now what we are solving for this, the youngest is a girl. Okay, and you will solve for at least one is a girl. Okay, so we are doing it for youngest is a girl. Okay, so if I want to find out P of E given F, ऐसा ही लिखा है ना, both are girls given that youngest is a girl. Okay, so P of E given F can be written as P of E intersection F divided by P of F. right. Okay, तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा E intersection F. तो यहाँ पे E का सैम्पल स्पेस GG है, F का सैम्पल स्पेस में GG एंड BG है. राइट. ओके, सो द कॉमन इज GG and it is same as the sample space of E, and the probability, if I'll write, probability of E intersection F is same as the probability of E, which is 1/4. so यहाँ पे हम लिख देते हैं probability is 1/4 divided by P of F लिखना है. so probability of F is 1/2 and it is 2/4 which is half 1/2. तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करना है. राइट. now you are going to find out at least one girl is there, उसकी probability क्या होगी. okay, so do it on your own.